We don't see our child's life beyond those 15 years of schooling till class 10. मेरे से किसी ने बोला आपके बच्चे स्कूल में क्यों जाते हो, स्कूल में क्यों नहीं भेजते? तो मैं बोला कोई भी स्कूल भेजो, अल्टीमेट गोल इज फॉर अ चाइल्ड टू सर्वाइव स्कूल। एक जो आपके स्टैंडर्डाइज मॉडल में आपने किसी को डाल दिया 17 साल, क्योंकि पता चला कि व्हेन ही इज 25 years old वो 17 साल की नॉलेज बेकार हो गया। योर डॉटर हैज कम एंड शी इज गॉट 17.5 आउट ऑफ 20, वही यूनिट टेस्ट वाला। प्रिशा को कितना मिला? प्रिशा खूब पढ़ती है। Increasingly, because of this pressure, you build some kind of a latent animosity towards Prisha. Yeah, absolutely. तो अल्टीमेटली जिसको हायर करते हैं उसको क्या क्वालिफिकेशन के लिए हायर करते हैं? Differentiator तो वो नहीं है. नहीं है। They hire you, not your qualification. Yeah. Once you start cooking, boss, whoever cooks better is recognized better. आगे It दरवाजे doesn't से matter आया वो है. cook दरवाजे से आया या बिल्कुल. खिड़की से आया. Because the one thing that you must all the time bolster, and I appeal to parents, is that never kill a child's confidence. If in the process of this crossing this stepping stone, you acquire this baggage of competitiveness, of burden, of stress, then how is it really preparing to be happy in your life? But you see, it goes to the heart of how we design our education, right? Correct. कि what is it that we are chasing really? Correct. हमें चाहिए क्या? Hi guys, welcome to CBFE, Central Board for Fixing Education. I have a wonderful guest today. This is Devraj Mukherjee. He's a professor for the last 30 years in Delhi University. And what's really nice is that he's deeply invested in pedagogy, teaching methodologies. And this is what I think you should know is that he says he celebrates the transformation of his students. कि कहाँ से वो शुरू हुए और वो कहाँ तक उनको लेके गए. So that's something I think is really beautiful. I am hoping that we'll learn from you today and we'll figure out some strategies for parents, strategies for students, teachers. What are the things that are going wrong? What are things going right? Where are we going in the future? That's the context for this chat. I hope to learn too. Huh. Because if you're not learning, you're not doing anything useful. Exactly. Yeah. So, let's just start with the life of this parent, right? Who is completely stuck between lots of different tensions. एक तरफ से तो you want your child to have a enriched life and you want them to grow, you want them to be happy, and then on the other hand IIT का पेपर भी देना है, competitive exam, IAS बन जाओ बेटा, नौकरी भी चाहिए. तो how do you see this? Like, what is your perspective on how this tension can be? This anxiety, in the modern context, this anxiety is amplified. It's not just anxiety about the student or the child. A parent is now very anxious about his or her own role also. Am I doing enough? Am I doing the right thing? Is somebody else's kid going ahead because they are doing better parenting than I? Yeah. I think that this over anxiousness is also something that one needs to address. That what parents can, should, ought to be doing to not only ensure a good life, a good future for their children and wards, but also to ease up a little bit. I mean, growing up is natural. But it's not easy to ease up. You have WhatsApp groups with all these parents discussing the best nappy, most eco-friendly diapers to buy, and it's not And straightforward. this helicopter parenting. What is this anxiety about? Like, what do you see? What is See, the context? I think of it? the anxiety, all anxiety, I think, comes from focusing on the short term. In the long term, everything sorts out, right? You also say time is the best healer, because when you give something sufficient time, it doesn't look as bad as it does in the short term. So I think this entire anxiety is just compacted because we don't see our child's life beyond those 15 years of schooling till class 10, 17 years to 18 years of schooling till class 12, and the next 3 to 4 years in college. And that's about it. We think once the education is over, life is set. So our entire anxiety is compacted. But your child will grow into an adult. Your child will grow up, probably settle down, find a partner, have children of his or her own, work in an organization or become a professional, get to be middle-aged at some point in time. So if you really care about your child, I think, don't be anxious, but definitely think about your child not
only up to the age of 18 or 22, but beyond. Yeah, because I mean, it goes back to that purpose of education question, right? That's the classic main problem कि हम education के लिए अपने purposes वही 16-17 year horizon पे रख रहे हैं या is it something that needs to empower me for my life? तो ये एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, अच्छा करना इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन इम्पॉर्टेंट है, शायद कभी कभी ये कहना भी इम्पॉर्टेंट है बहुतों के लिए कि मेरा बेटा या बेटी आईआईटी में गए या एम्स में गए या आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किए या बाहर जाके किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में उनकी दाखिले हुए, शिकागो यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं या ऑक्सफोर्ड से कर रहे हैं या एलएससी जा रहे हैं, वो स्टेटस से। मगर ये पढ़ाओ हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अलग अलग पढ़ाओ नहीं होता है। जो एपिक्स क्वेश्चन है वो एग्जाम या परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है। जो 1 करोड़ का सवाल है वो सवाल एग्जाम से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सवाल जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जो थाली होता है ना, थाली इज इनकम्प्लीट विदाउट द साइड डिशेस ना, तो ये भी वही है, मतलब वो साइड डिशेस नहीं है, सिर्फ बीच में चावल है बहुत सारा। So in this case, the side dishes would be application, connection to your real life, your ability to relate to your peers. If every kid in that classroom, your potential friend, your potential support system is your competitor. Yeah. Huh? Absolutely. And if your parents ask you, your daughter has come and she's got 17.5 out of 20, वही यूनिट टेस्ट वाला, प्रिशा को कितना मिला? प्रिशा खूब पढ़ती है, वो प्रिशा को 18 मिला। प्रिशा की मम्मी को कॉल जाएगा, प्रिशा को मम्मी को प्रिशा आपकी बेटी तो हमेशा 18 लाती है। So Prisha, who's otherwise a potential friend of yours, increasingly because of this pressure, you build some kind of a latent animosity towards Prisha. Yeah, absolutely. And that is something you're carrying I'll give ahead. I'll give you an even worse example of this. So I went to NUS. In NUS, we had a bell curve system. So we had not only just competition, it was competitive grading. So एक बार मैंने ये गलती कर दी, like a naive first year, I went to the percentile system. Percentile only. Grades are percentile based. How do you measure vis-a-vis the best guy? Yes, it doesn't matter if you get 30% or 20% marks, but if you got 20 and everybody else got 10, you're A+. Correct. Subject नहीं आता, but सबसे ज़्यादा आता है. That's the concept. तो मैंने एक दिन अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स से थोड़ा जाके पूछ लिया कि यार मैं क्लास में आ नहीं पाया, नोट्स दिखा दो प्लीज मेरे को जरा, आई वांट टू जस्ट सी व्हाट डिड आई मिस। दे रिफ्यूज्ड। कैन यू इमेजिन? आई वाज लाइक, वेल, कॉल योरसेल्फ माय फ्रेंड। थैंक गॉड आपको गलत नोट्स नहीं दिखाए। अब वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आई मीन वंस द कंपटीशन बिकम्स रियल, लाइक यू रियली हैव स्टेक्स, मिसडायरेक्शन कर दें। बट सी इट गोज टू द हार्ट ऑफ हाउ वी डिजाइन आवर एजुकेशन, राइट? करेक्ट। कि व्हाट इज इट दैट वी आर चेसिंग रियली? करेक्ट। हमें चाहिए क्या? करेक्ट। एंड आई डोंट थिंक दैट वी हैव इनफ कन्वर्सेशन। व्हाट डू यू थिंक? लाइक पेरेंट्स को अगर आप पूछो आज की डेट में कि व्हाट डू यू वांट फॉर योर चाइल्ड, व्हाट डू यू थिंक दे विल बी सेइंग? देखो, मैं तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ हमेशा। तो वो खुशी जिस चीज से मिलती है वो करे। बचपन होता ही क्या है? खुशी का एहसास करना। अब मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट ये बोलेगा बच्चे को खुश देखना इज लाइक फार फ्रॉम इट, ऑनेस्टली। करेक्ट, बट आप सोचो, you want like आप सोचो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, you want आप सोचो मेरा बच्चा जीते। so if you see this as a template, हम वो पुरानी कहानी पे जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। So if education is like a stepping stone to life, yeah, and it's one of the stepping stones to life, to the experience of life, then if in the process of this crossing this stepping stone, you acquire this baggage of competitiveness, of burden, of stress, then how is it really preparing to be happy in your life? Is education also a trigger for some people for lifelong frustration? So there is a model that's, and being an educationalist myself, I'm sure you would know that I understand the importance of marks, I understand the importance of performance, but the way to get there is not to pressure the child. That's the point I'm making. So what is the alternative? Like, help me imagine something that अगर competition हटा दें, मतलब you're living in an economy, it is a capitalistic society, competition is venerated as something that basically all innovation rests upon. First, I'll give you the smart answer. What is the smart answer is the top leaders in the so-called economy you're celebrating. Many of the top leaders in this celebrated economy are college dropouts. Quite a few of them are, and some remarkable examples, not just one or two, remarkable examples. Some of the top corporate leaders of Indian origin in the US, etc., are not necessarily from IITs, not necessarily from
IIMs. They are from engineering college, but lesser colleges. Yeah. So if your life doesn't end, if you've gone to Kota, attempted IIT, JEE 3 times and not gotten into an IIT, life doesn't end there. Yeah. So that's one thing. The other thing is that यार वो कहावत मुझे उर्दू है मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ शायद मेरे को कि शायद कि पता कि खुद को करो इतनी बुलंद की खुद ही को कर बुलंद इतना इतना खुदा तुझसे खुद पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है मैंने पूरा पैराफ्रेज किया बट काफी क्लोज था गाइस काफी क्लोज था बट सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथनिंग योरसेल्फ and those skills nobody can stop you from learning. I'm saying preparing yourself for the world that in which you will go and participate as a worker. You think that the competitiveness doesn't do that? Like, doesn't it make you a bit more cutthroat so you get the promotion over your... Actually, क्या होता है बताऊं मैं आपको, frankly बताता हूँ. You know, you're an engineer. How many engineers end up doing engineering? Not even one. So, but yet the IIT guy, if you're in the IIT, you get that 60 lakh per annum opening offer from some top international company. Why? Why do you get it? Yeah, I don't know. It's just that you have the ability to work hard, which you have proved by slogging to get in and to then get slogging in to graduate. and slogging to graduate. That's all. कि इसमें स्टेइंग पावर है That grit है आपका वो ग्रिट है स्टेइंग पावर है हाँ मैथ साइंस स्टेम स्किल्स बेसिक स्टेम स्किल्स है बट दे आर नॉट हायरिंग यू फॉर दोस स्किल्स दे आर हायरिंग फॉर हु यू आर for the attitude. for the attitude. So let's assume now if you assume this to be an axiom, it is axiomatically true that those who hire students for high paying jobs from top educational institutions are doing so in recognition for their grit and hard work. Then what it means is those who have exited an IIT will get a higher initial position in an organization because that grit and hard work is guaranteed by the degree they have obtained. And the admission But you, from a lesser institution, will not enter at that high entry level because you don't have a piece of paper that proves what an ex-IIT person can prove. However, does that prevent you from displaying those qualities once you're in the job? Also before, and then in another way. Also, no, after you join the job, you get a lower CTC, you don't get that high. But after 6 years, who's to say who will be more valued by that organization? Yeah, it comes back to the same thing, no? कि perspective आपका सिर्फ first job है या placement है या आपका perspective career है. Like if you're trying to build a life of professional success. Somebody is getting in through the door, somebody is getting in through the window. Yeah. Inside there is a kitchen. Once you start cooking, boss, whoever cooks better is recognized better. It doesn't matter वो cook दरवाजे से आया या खिड़की से आया. So you're saying two related things, right? First, you're saying कि as parents, stop defining success in very limited ways, right? There is a much longer life to live. There is happiness to be had in other things than professional success. And second, you're saying कि तुमने जिन चीजों पे importance डाल के रखी हुई है, like competitive exams, college admission, पहली नौकरी placement, जिसकी वजह से तुम्हारे सारे school life, childhood, everything is getting aligned in that direction. Those things are probably much less important, even for professional success. Absolutely. Like if you want professional success, those are maybe smaller markers compared to मैं parents के लिए your own attitude. मैं parents के लिए बहुत एक आसान सा सवाल पेश करता हूँ जिससे उनको समझ में आ जाएगी बात. एक इंटरव्यू चल रहा है. इंटरव्यू में 30 लोगों को बुलाया गया. इंटरव्यू का जो इश्तिहार होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें क्या लिखा होता है कि ये जॉब टाइटल है, इस जॉब टाइटल के लिए ये क्वालिफिकेशन है. तो क्वालिफिकेशन में मिनिमम बेंचमार्क तो होता है कि आप ये कम से कम ये क्वालिफिकेशन तभी आप आओ, हाँ या ना. तो जो लोग वो 40 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, सबकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? सेम है. तो सबकी क्वालिफिकेशन सेम है. तो अल्टीमेटली जिसको हायर करते हैं उसको क्या क्वालिफिकेशन के लिए हायर करते हैं? डिफरेंशिएटर तो वो नहीं है. दे हायर यू, नॉट योर
क्वालिफिकेशन। Yeah. तुम क्वालिफिकेशन के पीछे पड़ जाओगे तो खुद को तैयार नहीं करोगे। मैं कहता हूँ खुद को भी तैयार करो, क्वालिफिकेशन अर्जन करो, गैदर योर क्वालिफिकेशन, नथिंग रॉन्ग विथ इट। आई हैव आल्सो गैदर्ड अ लॉट ऑफ क्वालिफिकेशंस along the way, but I've focused as much on myself as I have on those qualifications. For example, when I stand up and teach, there is something called scholarship, which is the subject I know. But there is also something called communication, there's something called empathy, there's something called passion. वो तो मेरे अंदर से आ रहे हैं ना, मेरे सब्जेक्ट से नहीं आ रही है वो। My knowledge of my subject is not giving me that intensity inside the classroom. And it is that intensity that makes me a good teacher in front of my students, not just my knowledge. Every teacher has that knowledge, otherwise they won't get that job. We go back to our first principle, that a child should be investing in that which she or he is interested in. So it's important for a child to be able to identify what really triggers What his or her, sparks? what sparks her interest, and more than interest, I think involvement. ये जो साधना है, शिक्षा, जिज्ञासा is also a kind of a sadhana. It's a state. That deep inquiry, if you want to really be knowledgeable in your field, you have to feel it from within. Yeah. Nobody can impose it from the outside. The problem is when you impose it, when you begin to impose it at an early age from the outside, the child builds a negativity towards studies, like you said. Yeah, there's that We want to motivation. encourage a deep love and interest in learning. And our parents, I think that is their huge duty to discover what is it that the child really wants to Go for after, yeah. Exactly. और Yeah. उधर फिर encourage करें. I think that's also an interesting little tension, right? Like the world that our parents grew up in was much, much more limited compared to the kind of opportunities that exist now. I think a lot of parents just struggle to find out कि और हो क्या क्या रहा है दुनिया में. And I don't think schools are also getting updated, right? The syllabus is still the same from 20 years ago. And like usually every child I've met, right, has something, you know, like whether it's entrepreneurship, whether it's sports, whether it's art, or sometimes like Anime, gaming. Yeah. I met a girl who wants to be a K-pop star. She's already writing her own song. She's in 5th standard. You know, what if your child is a storyteller and also likes playing video games, or whatever it's called, gaming. Oh, tomorrow she can be a game storyboard creator. Yeah, but I think it also goes down to just a question of trust, you know. Like a lot of parents think that अगर हमने छोड़ दिया खुला, तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे and they will eventually end up being vagrants. So your behavior is usually regulated through indices. One is coercion, the other is self-restraint. You don't do something because you are scared of the coercive opposition to that action. Meaning some consequences are there. So this is called prescription. मतलब आपको वर्जित है, मना है, उसलिए नहीं करते. Right. दूसरा है आप खुद को रेस्ट्रेन करते क्योंकि आपको लगता है कि ये गलत है. तो वही पेरेंट्स को सोचना है कि ट्रस्ट से क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल मिलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होता है. आप ट्रस्ट करोगे तो वो सही करेंगे, आप मिसट्रस्ट करोगे तो वो गलत चीज करने की तरफ आकर्षित होंगे. My son is going to college. My daughter, on the other hand, is still in school. She's bright in my estimation. But what's been most important, what happened? I just did. Okay. Kind of bright. But my primary joy just now is to see her happy. वो पेंट करती है, वो पढ़ती नहीं है, किताब नहीं पढ़ती है, जबकि हमारे घर में किताब ही किताब है. She is very creative, but she paints. And she is not an art student, she is a science student. तो उसके दिमाग में बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें चल रही है. So I'm not pushing her anywhere. She's being a lot of people at the same time. वो बनियान काट के वो अपने लिए एक ड्रेस बना लेती थी बचपन में, तो वो ड्रेस डिजाइनर भी बन सकती थी. अगर उसका दिमाग डिजाइन की तरफ जा रही है अभी, शायद आर्किटेक्ट बने, शायद ना बने, शायद ऑटोमोबाइल डिजाइनर बने क्योंकि F1 अच्छा लगता है. It's not for me. It's for me to let her be. But in being, she's also finding, she's also discovering. Failing, experimenting. Yeah. And वो जर्मन का एग्जाम था, आज था एग्जाम उसका, तो मैंने बोला तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं, कल 3 से 9 बजे तक मैंने पढ़ा. 6 hours. She's 13. बोले oh, my friend and I, we were on the phone and we were both preparing. We studied for 6 hours without zero supervision.
holiday homework इस बार करी वो, I was amazed. She did her entire holiday homework with zero reference to parents. वो सामान भी खरीदना होता था, वो मार्केट से अपना सामान उमान चार्ट पेपर वगैरह ला के, तो I'm sorry to say this, I shouldn't be giving my own example, but here is a child who's completely responsible in her schoolwork, and she's being that way after having been left alone to be happy. Wow, yeah. I see there's a lot of research on this also. What you're talking about from an anecdotal perspective, Yeah. like Sugata Mitra is a classic sort of that self-organized learning environment. का basic funda यही है. Yes, कि exactly. you don't have to teach really. You don't have to push. You don't have to. You Yeah. basically create what is called the environment for learning, Correct. which is security, confidence, encouragement. You don't Correct. even need an expert. This grandma Encouragement is experiment- very important. Yeah. No comparison, zero comparison, maximum encouragement. Yeah. You can do it is all they really need to hear. They don't need to hear that your brother is doing this or your classmate is that. That is the worst thing you can do to a child. Because the one thing that you must all the time bolster, and I appeal to parents, is that never kill a child's confidence. And a child is going to face a lot of, what can I say, negativity from teachers on occasions, from peers, from the outside world. From the board. From the board, the only place where they can have a bulwark against such negativity is from parents. एक फॉर्मूला दूं आपको, एक फॉर्मूला दूं. हाँ. बच्चों को खूब प्यार दो. अगर आप प्यार दोगे तो बच्चों में क्या होएगा? I'll make you give me the answers. If you give a lot of love to the child, what will the child They'll feel? feel loved. They'll feel comfortable. There's a word beginning with S. If you- supported, Secure. secure. If the child is loved, the child is secure. If the child is secure, the child is Empowered, okay. There's a word with C. The child is confident, confident. If the child is confident, the child is willing to do what? It comes with E. express, Express, experiment. experiment. Yeah. If the child experiments, what does the child get? It's a word beginning with A. Achievement. Exactly. Uh, So there is a direct connection between Love. and achievement. it's really nice. Yeah. You gave me the Yeah. answers. So love will give security, So, will allow confidence. And if you love your child, experiment and if you love your child, what would you want your child to be? Happy. happy. Mm. Yeah. Let's talk about this school system. Okay, Huh. like give me a sense of what you feel are the quick problems that parents need to be aware of from a school perspective. Like we've already talked about the competition problem, right? Like a lot of the orientation is towards succeeding over your peers, and उसकी वजह से problems होती हैं. What are some other things that you see as big picture issues with the way we are doing education? This sounds weird, but I have. मेरे से किसी ने बोला आपके बच्चे स्कूल में क्यों जाते हो, स्कूल में क्यों नहीं भेजते हो? मैं बोला कोई भी स्कूल भेजो. Ultimate goal is for a child to survive school. कि 12वीं तक स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद में उसमें उतनी जिज्ञासा रहे, उतनी क्यूरियोसिटी रहे, उतनी एंथुजियाज्म रहे, लाइफ को एम्ब्रेस करने के लिए उतनी इच्छा रहे और लाइफ के जूझने के लिए उतनी शक्ति हो. None of these core life skills should be squashed by those 12 years or 14 years of school education. That is the minimum benchmark goal. And seriously, I actually feel it. Being an educationist, that's what I feel, that my children should survive school. Unharmed. Yeah. Unharmed. Here. So, how do you support a child? I think the problem is parents, I think at times don't have adequate time in the modern world. And they have outsourced their child's upbringing completely to the school with huge expectation. इस स्कूल में ये नहीं होता, उस स्कूल में ये होता है, ये एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, ये खेल खेल के सिखाते हैं, वो पढ़ा के सिखाते हैं. ये जर्मन है, ये अमेरिकन है, ये यूके ये का है. हाँ, ये कोई कहता है आईबी में डाल दो, कोई कहता है सीबीएसई में. बोले नहीं, आईसीएसई की इंग्लिश अच्छी है, कोई कहता है नहीं सीबीएसई की साइंस अच्छी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीबीएसई अलाइंड है, ये वो. They get into that. They forget that the real learning is something that the parents should inculcate and encourage in children. मैं तो कहता हूँ किसी दिन बेटे या बेटी को जब 12-13 साल का हो जाए, होलसेल मंडी में ले जाओ संडे के दिन, सैटरडे के दिन. अगर संडे के दिन होलसेल मंडी बंद हो, just take them to the mandi. 4 hours in the mandi, leave your wallet in the car. 4 hours in the mandi will give them more learning about how commercial activities happen
10, 5. Effort करो. Yeah, there's a wonderful article about the math skills of street kids. Correct. Because they are counting the All the rupees time. all the the time. time. So their mental maths is phenomenal. Phenomenal. Yeah. In Japanese schools, you know, children actually look after the cleanliness of the school. So वो बाथरूम खुद साफ करते हैं. कोई अटेंडेंट नहीं होता है, वो क्लास साफ करते हैं खुद. सो ये जो पूरी जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ स्किल्स हैं, वो स्कूल एजुकेशन के अंदर ही इम्बाइब कर दिया उन्होंने. सो दैट व्हाइल यू आर प्लेइंग, यू आर लर्निंग, यू आर वर्किंग, यू आर बिल्डिंग योर बैग फुल ऑफ लाइफ स्किल्स. तो हमारे यहाँ क्या है, स्कूल की जो करिकुलम है प्योरली ट्रांजैक्शनल है. मतलब ये पढ़ के ये एग्जाम लिखो, इतने मार्क्स लाओ तो ठीक. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लर्निंग को डेली एक्टिविटी के साथ जोड़ दो. छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करो. खाना बना रहे हो, बच्चे ये नहीं खाते वो नहीं खाते, एक बार किचन में बैठा के ना उसको खाना बनाने में मदद करवा दो. वंस दे सी द फूड इज नॉट समथिंग ऑन द टेबल बट समथिंग दे हैव हेल्प क्रिएट, they will start eating it. So all these things, these little small learnings. Bathroom साफ करना है, साथ लेके साफ करो. I mean, you don't have to tell a child to read. Just sit in the afternoon, evening, even if you don't feel like, both partners can sit and just decide to read a book each. That's it. The kids will want attention. Sorry, we are reading. They'll think, अरे माँ बाप पढ़े तो मैं भी बैठ के पढ़ लूँ. तुम खुद ही नहीं पढ़ोगे तो वो कहाँ से पढ़ेंगे? So these are small things that the real solution to these anxieties don't always rest in the school. There's or the curriculum. Absolutely right. There are solutions in your life, in your domestic space, in your daily activities, in your together activities, that actually can be a huge supplement or complement to the school. That's such a great point. Ki, matlab, we always talk about education and learning as confined within that sort of 7 hours of school, but actually really that's only 1/3 of the day. Learning is a way of life. Learning is not something you do in school. Learning is wanting to know. And wanting to know is a कीड़ा. ये कीड़ा है, जैसे मुझ में है और मैं कुछ साल बाद 60 साल का हो जाऊंगा, फिर भी वही कीड़ा रहेगा. मेरे मरते दम तक मेरे दिमाग में वो कीड़ा रहेगा. अब वो कीड़ा कहाँ से आया मुझे नहीं पता. Wanting to know is a mindset. उसको कल्टीवेट करो. 10 चीज़ों के साथ 6 चीज़ ऐसे सीखोगे जो तुम काम में ला सकते हो. लेकिन वो सीखने की जो इच्छा है, वो जो पद्धति है, वो किसी मैनुअल में नहीं लिखा है. वो एक माइंडसेट है. And वो इनबिल्ट है. वो इनबिल्ट है. वो माइंडसेट बनाओ. We are born with that. We just have to cultivate all it. kids are born with that. Every kid. Why does a kid bloody poke his finger into the socket यार? मतलब कोई हद है यार. क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? वो जानना चाहते हो. एवरी किड इज क्यूरियस. बीच में एक आया नहीं था कि टॉपर आया था कोई, सीबीएसई टॉपर जो होम स्कूल था. द्वारका में रहते थे वो फैमिली, 4-5 साल पहले की बात है. कभी स्कूल ही नहीं गया और टॉप भी कर गया. I mean, उन पे आधारित हम टेम्पलेट नहीं बना सकते. बट आई एम सेइंग इज सम पीपल हैव दैट एंजाइटी आल्सो कि ये सिस्टम नहीं तो और कैसा सिस्टम. और मेरे ख्याल से वैसे सिस्टम्स फ्यूचर में आएंगे. नहीं, बट आप अगेन लाइक आई जस्ट वांट टू नो कि आज की डेट में जब ओके यू नो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सो वेल, दैट्स व्हाई वी गॉट इन टच. सो 1980 में आया था द इंटरिम वन दैट डिडंट द कंप्लीट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. ओके. और आज जो आया है 2020 में, इट इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. NEP. It's not new education policy. बहुत लोग new. As in the new NEP is what I was trying to say. The new NEP is actually called National Education Policy 2020. So I'm reading this document and I think you have read it and implemented it and understood it, wrote about it. I just want to ask a very simple question. कि जब सबको पता है कि ये सब problems हैं, why is the system the way it is? Why are we here today? Because आप अगर सीरियसली YouTube अगर आप सर्च करो, I've been doing this experiment कि यार अगर मैं कुछ बनाने लगा हूँ वीडियो, मैं देखूँ जाके कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में और क्या कह रहे हैं आपको पता है. आप बिलीव नहीं करोगे, 99% people think it's Macaulay's fault. Macaulay hasn't been on earth for 200 years. एक तो Macaulay को मिसकोट करते हैं. WhatsApp यूनिवर्सिटी एक है हमारे देश में, उसमें Macaulay का मिसरिप्रेजेंटेशन है. वहाँ कहते हैं कि Macaulay कहते हैं ये तो बहुत उत्तरीन सभ्यता है, यहाँ का लिटरेचर बहुत हाई है, विशाल है, और अगर इनकी हिम्मत को तोड़ना है तो इनकी लिटरेचर को तोड़ो, इनके अस्तित्व को तोड़ो. दैट एक्चुअली ही नेवर सेड. इन द मिनट बिफोर द
पार्लियामेंट, आई थिंक 1835-36 जब भी था, उस मिनट में वो कुछ और कहा है. इनफैक्ट ही वाज वेरी डिस्पैरेजिंग अबाउट इंडियाज द वैल्यू ऑफ इंडियाज टेक्स्ट. उसने बोला हिंदुस्तान की जो सारी संस्कृति है is not good enough to fill one shelf of a British library. Which makes much more sense with that time So actually. he had that I arrogance. didn't know that. Then तो क्योंकि लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, एक्चुअल मिनट नहीं पढ़ते. मैकॉले के मिनट्स मैंने पढ़ा है जो ओरिजिनल है, आप ऑनलाइन ले लो और पढ़ाओ. उसकी आपको मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगा please, कभी. I'll put it नहीं in नहीं, the- आई शेयर्ड दैट पर्टिकुलर सेक्शन विद समबडी वेरी रिसेंटली टू वो डिसअब्यूज दैट पर्सन कि वो मिस इन्फॉर्मेशन दिया था मैकॉले के मिनट्स को. makes sense. No, और that's the उसमें whole उस सबसे बढ़िया था मरने कि दो इंडियंस को. नहीं, वहां पे सबसे बढ़िया था कि एक जगह कैलिबर लिखा है, इनके कैलिबर, हाँ. और उसकी स्पेलिंग थी CALIBER. तो मैंने बोला यार उस समय ब्रिटिश लोग अमेरिकन स्पेलिंग में कैलिबर तो नहीं लिखेंगे. Oh. तो ये जो फर्जी है वहीं से पता चल जाता है. Oh, wow. आप पढ़ना उसमें कैलिबर का स्पेलिंग किसी आरी होना चाहिए. वो तो वही Yeah. तो है ना. दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. योर माइंड शुड अप्लाई टू दीज थिंग्स एंड यू विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ. एनीवे व्हाट ही सेड, मैकॉले ऑफ कोर्स हैड एन एजेंडा. मैकॉलेज एजेंडा की इंग्लिश एजुकेशन फैलाओ ताकि हमारे यहाँ मिनी इंग्लिशमैन हो, सब्सिडाइज इंग्लिशमैन, जो हमारा काम करे हिंदुस्तान में, जो बाबू कल्चर जो उन्होंने Correct. बंगाल में किया. दैट्स ट्रू. मैकॉले ह्यूजली रिस्पॉन्सिबल. बट हेलो, आई मीन It's been a while. no, Honestly. not only that. I mean, you've also got a lot of value from that interaction. Yeah? The world has, you think, I give you a simple example. अब इंडिया अगर सडनली बोलने लगे कि जीरो हमारे यहाँ से गई है, जीरो के बगैर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता क्योंकि 1 0 ऑन ऑफ 0 1 0 1. तो हर कोडिंग, हर सॉफ्टवेयर कोड, इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट जीरो हम पे है. तो सॉफ्टवेयर कोई भी लिखेगा हमें पैसे देगा. Yeah. तो पेट्रो डॉलर्स तो कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर डॉलर्स मिलेंगे हमें धड़ाधड़. Yeah. World is full, ideas floated all over the world across time and space. पेपर कहीं चाइनीज वालों ने सीखा था, फिर इजिप्ट में भी बना. हाँ, एग्रीकल्चर कहीं से कहीं, टमाटर और आलू न्यू वर्ल्ड विच इज मेक्सिको और पेरू वगैरह से इधर आए. और अब हर जगह आलू है इंडिया में. तो मिर्च, Yeah. धनिया और टमाटर वहां से आए. चाय. नहीं, अब दिल्ली वाले का सोचो ना. हाँ. जो दिल्ली वाले हैं उसको कहो कि बगैर आलू, धनिया और टमाटर और मिर्च के खाना बना के दिखा. Yeah. So the world is an amalgam. Yeah. And every accident of history is also a learning experience. You don't have to berate that accident. Accident से ही बहुत अच्छी चीजें निकलती हैं. Yeah. So learning, we also got exposed. Today, if India is at the apex of, at least has the potential to be at the apex of the knowledge economy going forward, it's because of this bevy of knowledge that we assembled, and because of our natural ability to learn. And I think there was some ability because we have thousands of years of scholarship. Of history of that. Yeah. वो था, लेकिन उसके साथ जब मॉडर्न साइंस एक्सेट्रा जुड़ गया तो हम उसको प्रोसेस किया. हमारे यहाँ से साइंटिस्ट निकले, हमारे से सोशल थिंकर्स निकले, हमारे यहाँ से कवि निकले, सबको ही निकले. एनरिच किया ना. तो Yeah. वहाँ कहीं कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता. व्हेन यू इंटरैक्ट विद somebody else's Yeah. language, somebody else's philosophy, somebody else's science, there is no contraction, there is an expansion. So we don't need to be apologetic about Macaulay. Yeah. But having said that, there's no harm in understanding one core aspect of knowledge. That ultimately in this knowledge economy, power will belong to those who produce knowledge and not those who merely consume knowledge. ये जो स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, दिस जस्ट मेकिंग यू मोर एंड मोर एफिशिएंट कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज. लीडरशिप बिलोंग्स टू दोज हु प्रोड्यूस नॉलेज. एक छोटी सी सेमीकंडक्टर आप बना रहे हो, पूरी दुनिया में उसको मैन्युफैक्चर कर रहे, ये कर रहे, बहुत पैसे कमा रहे, लेकिन उसकी पेटेंट का जो पैसा है वो आप ही के पास आ रहा है. अब इस तरह की ड्रग, एक लैब में जितना पैसा आ रहा है एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रग पेटेंट के लिए, वो उतने मैन्युफैक्चर नहीं कमा रहे हैं जो वो पेटेंट वाला कमा रहे हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू. In a knowledge economy, power belongs to producers of knowledge, not consumers of Correct. knowledge. That's such a And powerful idea. I would like to link it. Our schooling system, we are very anxious about making our children better and better At and more consuming, efficient consumers of yeah. knowledge, not producers. और produce knowledge तभी करेंगे जब critical thinking करेंगे. Yeah. Critical thinking का मतलब है कोई भी चीज जो appear करता है वो contextual होता है. हर सच्चाई contextual होता है. उस contextual सच्चाई के पीछे जाके उसकी actual तत्व क्या है,
वो एक्चुअल सच्चाई क्या है, वो जब आप ढूंढने लगते हैं, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग फैकल्टी को एक्टिवेट करते हैं. वो मानसिकता टू गेट बिहाइंड द ट्रूथ, what the apparent truth, so that you address the actual truth. ये जो mentality है, research तो वहीं से आती है, you know. So we are blessed. We are a land of thinkers, critical thinkers, जो against the grain सोचे. चाहे आप ज्योतिराव फुले कहें, आप राम मोहन रॉय कहें, बंकिम see Ram Mohan Roy was against sati. Okay, Ishwar Chandra Vidyasagar was for education of the girl child. Bankim Chandra Chattopadhyay was for the remarriage of young widows. So these people thought against the grain. समाज में कुछ चल रहा था, उसके परे सोचे ना, तभी तो बात आगे बढ़ी. बात आगे. George Bernard Shaw had said something beautiful in his preface to Man and Superman, if I'm not mistaken. He said that the rational man, he said man, person, कुछ भी कह ले, the rational man adapts himself to society. The irrational man expects society to adapt to him. Therefore, all progress predicates on the irrational man. तो progress और change irrational आदमी लाता है. rational आदमी तो adapt कर लेता है अपने आप को. I like that. Demands of society. Just, but it's something to think about. Beautiful. And that's what that's the direction we are pitching. Yeah. That make your child an outlier. Yeah. और हिम्मत हो आप में कि बच्चे को आउटलायर, और उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना होता है, उसको जरा छोड़ दो. छोड़ दो. वो आउटलायर है. He was born an outlier, यार. Yeah. She was born an outlier. So we've talked a lot about what's wrong, what is required in the abstract, what the child needs, what you need to reduce your stress. What is education looking like in 20, 30, 40 years to your mind? It's always important to have a plan. 3 things. 3 चीजें हम साइन पोस्ट करते हैं. पहली बात तो ये जो क्रोनोलॉजी है, इसने किसने दिया आपको? नर्सरी में पढ़ो, फिर 10वीं क्लास तक पढ़ो, फिर 12वीं क्लास तक पढ़ो, फिर कॉलेज जाओ, फिर हायर एजुकेशन. थक नहीं जाओगे यार. Everybody is not a marathon runner. Suppose you're a sprinter. 100 मीटर दौड़े, चिल मारे, फिर बाद में एक और 100 मीटर दौड़े. तो हमारे तो सबको मैराथन रनर बना दिया ना. Yeah. But not everybody is meant for a marathon. So what I'm saying is, and just think about it. Now kids who've got out of school, for example, Delhi University is still not open. They're probably opening in September. My child who's intending to join Delhi University finished his board exam in the end of March. Yeah. April, May, June, July, August, 5 महीने. सितंबर में अगर खुलती है, वो बच्चा 18 साल की उम्र में 5 महीने कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, जबकि उस समय उसकी एब्जॉर्प्शन लेवल, इच्छा लेवल सबसे पीक में है. पीक. Yeah. व्हाट नॉनसेंस. मतलब वो पढ़ेगा तभी जब स्कूल खुली होगी, वो पढ़ेगा तब भी जब यूनिवर्सिटी में दाखला मिलेगा, जब किसी ने बोला कि करो. किसी ने बोला. There has to be extrinsic instruction. Also need, it's a वो क्या कहते हैं, वो क्या need क्या होता है? अरे वो शब्द है जो Necessity? नहीं, need to know basis कहते नहीं है. You are on a need to know basis. ये भी वही है, need to know basis. मतलब तुम स्कूल में हो तो तुम्हें जानने की जरूरत है, नहीं हो तो जानने की जरूरत है. ये मॉडल जो है, ये क्रोनोलॉजी जो है, ये बदलना चाहिए. क्रोनोलॉजी को समझो. करेक्ट. क्रोनोलॉजी को समझो और क्रोनोलॉजी को बदलो, तोड़ दो. So ये होने वाला है, ये क्रोनोलॉजी तोड़ने वाला है. What does that look like? अगर क्रोनोलॉजी टूटती है, means you learn at your own pace. Is that? That, and then there is a discreteness of learning, meaning you don't have to learn in a continuous model. You can learn in broken models. Okay. So, and also learning on demand. For example, if you're 30 years old, I mean, and this happens all the time for example, software professionals, because their knowledge gets outdated very fast. So they are training all the time. They are learning new skills at 30, right? Especially if you are a software professional. But with AI, you will probably have to learn all kinds of skills and unlearn certain other skills all the time. All the time, yeah. So we are actually entering an era of work culture where learning is not a constant. You don't come to the work sphere with a bag full of knowledge to apply it. To apply, and then that's sufficient for the rest of your career. Yeah. Not true. Yeah. You have got to learn and unlearn all the time. So this chronology has to be broken and will be broken. Yeah. So now you will have to learn new skills.
We teach and what monkey new tricks or something. What is it? Whatever the saying is. Yeah. So you will have to learn new tricks. Yeah. And sometimes forget your old ones. So this is something big that's going to happen. Superb, yeah. So So chronology tootna, just to yeah, get my head around it, you're saying obviously you will start learning at your own pace. You could be a marathoner, you could be a sprinter, you could Correct. be, any kind of pattern. you could it be should serve it. could be an athlete or you could be a field sports person. You could be an individual sports person. You could be a team sports person. But you will decide what you want Correct. to apply, and Correct. then only like video on demand ki jagah Correct. learning on demand. And that's possible because of the resources that Yeah. is available now. And the tech now that I'll give you a allows simple that. example. Earlier, only your school teacher knew the answers, right? Now Google knows much more than your school teacher, and AI knows much more than Google. And tomorrow, Which is the reason why the lecture model exists, right? Yeah, Ki in yeah. Europe, there was one astronomy expert, correct. so everybody had to Correct, go all the way there correct. to learn. Ab and kya now you zarurat don't hai? even also have to go there because you'll find some mechanism Yeah. for his lectures or her lectures to be reach you. transmitted all over the world. Yes. Secondly, Yeah. actual practical skills which you needed to learn. I mean, it's a nice romantic model, the apprentice model, the guild model. So that is, in a sense, it's nice, it's romantic, but that's also a little old world. आजकल आप जाओ हर मॉल एक जैसा दिखता है. It's not such a nice thing, but that's the reality. The world we live in, yeah. So in this new world, information is also available differently. वो स्कूल में जाके आप वो सीख के दिमाग में बसाए क्योंकि वो आपको ज़रूरत पड़ेगी. अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप डाउनलोड कर सकते हो. आपको गाड़ी के टायर चेंज करना है, नहीं सीखे, गाड़ी चलाना सीखे, YouTube वीडियो देखिए, चेंज कर दीजिए. Yeah, but the thing is, आपका कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, कंप्यूटर को असेंबल करना है, YouTube वीडियो देख के असेंबल. आई एम नॉट गिविंग अ वैल्यू जजमेंट. ऑल आई एम सेइंग इज that these skills that you learnt earlier are now onboarded on cloud somewhere. जब भी आपको जरूरत, आपके सीए आपको फोन करते हैं, कहते हैं न्यू टैक्स रेजिम के साथ कर दो भाई. कर दो. अब किताब में है ही नहीं. किताब में है नहीं, लेकिन आप इंटरनेट पे जाओ देख Yeah, लो. yeah. और कहते हैं एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको पता नहीं. और वो डिजिटल लिटरेसी क्लास दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल देयर इज अ पेपर कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्किल एनहांसमेंट. उसमें मैंने देखा था एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस. क्या जरूरत है जानने की? जब आपकी सीए आपको फोन करते हैं, वो 2 मिनट में इंटरनेट में चेक करो, आपको पता चल जाएगा. सो योर हेड डज नॉट हैव टू बी नाउ लोडेड विद मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी learnt on demand. And also too many things to learn. And Exactly. Also, how much will you hold? So on learn to? the fundamental thing. Yeah. Learn how to get the big idea. Because there was a time when coders were hugely valued. Now coders are at the bottom of that of the value chain. Yeah, because वो automate हो रहा है. And so you have software to write software now. Yeah. So likewise, I'm saying that एक जो आपके standardized model में आपने किसी को डाल दिया 17 साल, क्योंकि पता चला कि when he is 25 years old, वो 17 साल की knowledge बेकार हो गया. Irrelevant. Chronology, instantly. yeah, exactly. So you have to learn on the go. You have to learn all the time. You have to have a mindset, a mansikta, which is proactive to learn. Therefore, what you said, learn to learn. You need to learn. You need to be taught early on how to learn, or to learn how to learn. Meaning So you the need the school tools of the of future, learning. are you saying that syllabus नहीं होगा? Syllabus will be on demand. Would you say? I am hoping for a future where a child can design her own syllabus. जो मुझे अच्छा लगे मैं पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ नया पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है. I will add that one extra rung to the ladder that takes you to the apex of that specific field of knowledge. एक रंग लगा दिया, मेरी contribution बहुत है. That's when I produced that one Then rung. I've produced, yeah. Exactly. Which actually also reminds me of, you just said earlier ki the idea of, questioning is so important. Absolutely. I just had a very weird thought ki actually questioning is so important also because you can then Google it. You have to know what to Google, not the answer to that question, but just the search terms. You know what I mean? Absolutely. Like if I'm facing a problem, I don't know whether to put the words, what are the tax laws in my country, which is what happens in code, right? If you don't So know. the real challenge is not it's to find the answer, it's but to define the question. Phrase the question correctly. Is to define the Yeah. question. If you have the question in your mind, the answer is there. So you see, now you have to totally reimagine the pedagogic universe. Earlier, the quest was to know the answer, which is the testing model that you have.
which is this rote learning model, the recall model, the memory वो करने के लिए अब हमारे पास machines हैं. machines है, तो क्यों burden करें ना Yeah. फालतू चीजों से? फिर उसकी replacement क्या करोगे आप? Question पूछना, critical thinking करना, how to get the big idea. So you take advantage of this And new such an world. optimistic sort of vision as well, right? Yeah, Like you take then- advantage of this new world. Yeah. So, okay, School of the Future has self-initiated syllabi, Yeah. has Learning no on the go. chronology, Learning on the go. learning on the go for what you want to learn, Correct. for what you want to apply at that. And learning is a lifelong thing. And learning is a lifelong thing, so it's not like कि 16 साल पे school खत्म हो गया. So some aspects of it is codified, where it is aligned to your professional requirements, etc. But not all aspects of learning are codified. So you can learn without a purpose also. उसके लिए भी possibilities हैं. Yeah, whatever you want to learn, basically, Exactly. whether you want to apply or you just So want learning then gets dissociated. It's not necessarily aligned with your career goals. to. Learning is now aligned with your self-enhancement goals. Superb. So I can see it. Okay, then what else? Then the other thing, and this is the last thing we should talk Sure. about, is the future university, the future, Higher the future of education. higher education, higher learning. I have a very science fictional model of the future university. Best. कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ लो, एक सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, जहाँ एक प्रोफेसर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दैट डिसिप्लिन पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, वहाँ एनरोल कर लो. देयर इज अ पेमेंट मॉडल ऑफ कोर्स, एंड देन क्लासेस आर कैन बी हेल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. दे आर नॉट लोकेशन स्पेसिफिक. आप शिमला घूमने गए हैं, आपके पास ऐप है जो आपके एनेबलिंग ऐप है. उस ऐप में आपको बताया जाता है कि इस समय इस जगह आपकी Oh, ये nice. क्लासेस होगी 1 घंटे के. Yeah. वहाँ 2 लोग आते हैं जो स्विट्जरलैंड से घूमने आए हैं इंडिया, वो शिमला में होते हैं, वो भी आपके साथ एनरोल्ड है. एक लोकल शिमला का बंदा है, वो भी एनरोल्ड है. 4-5 लोग एक जगह इकट्ठे होके आप क्लास कर रहे हैं. क्लास किए, ओके बाय बाय टाटा थैंक यू, आप चले गए. आपकी Wow. क्रेडिट्स लॉग हो गए, आपने इंटरेक्ट किया. कल आप कभी जंगल में होंगे तो फिर आपके इंडिविजुअल क्लासेस हो गए. So what I am saying is the higher education model will be not university specific, not discipline specific, not professor specific, not peer group specific, But learner specific. but learner specific. And everything will be deliverable because of technology. So you can then become, everybody will become an university graduate of their own Specific thing that you want to तो excel ये at. customization total है ना. Personalization जो Total है. buzzword है, but taken to its logical conclusion. Yeah, it's तो almost like, प्लेन वनीला मॉडल में आप पिज्जा में कुछ भी डालिए, उसकी वो सबवे का वो जैसा है, मतलब. but it's dressing can I just say like it does sound like it's a little post national. हाँ. It is post centralization. It is that post regulation. post regulation. Most important thing is post regulation. But of course, who cares? Who will care? See, you see, the point is that the national model is useful because that's what we have. Yeah. Because we don't have the resources and the technology to go beyond the national. There has to be some kind of certification, there will be some kind of standardization. Because it's difficult to put it all together transnationally, trans-territorially, Discipline. transdisciplinary. Yeah. But when you have the technology to do it, why would you depend on this? यार? वो जो होता है ना, रोबोटिक ऑपरेशन होता है ना, अमेरिका में बैठ के कोई बेंगलोर में किसी पे हार्ट सर्जरी कर रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत क्या है? टेलीमेडिसिन है ना. And also the आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आपके वो पेसमेकर से फटाक से वो आपके डॉक्टर के ईसीजी में यूं चलने लगा है, खुद ही कॉल कर लेते हैं. खुद ही कॉल कर लेते हैं. तो इट्स देयर, इट्स गेटिंग डन. दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ शेयरिंग ऑफ नॉलेज ना. वो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं, रिमोटली कर रहे हैं ना. अगर डॉक्टर आपको रिमोटली ट्रीट कर सकते हैं, आपके प्रोफेसर आपको रिमोटली पढ़ा क्यों नहीं सकते? EWB it's called, Education Without Borders. Yeah. Doctors Without Borders. Yeah. It's going to happen. See, this is definitely. Luckily for me, I will have much retired by that time. जो मेरे younger colleagues हैं, वो अपने आप को संभाले. हमें छोड़ गए वो. नहीं, मैं तो घर बैठ के पढ़ाऊंगा. मुझे जो बोलना होगा मैं बोलूंगा, जिसको सुनने होगा सुनेंगे. Yeah. Through YouTube. Like Shair Ludhianvi, I will say my thing. Yeah. Someone will say it better than I. Someone will understand it better than my student. But that model will continue through YouTube, through so many other. Even YouTube, you see, somebody, I don't even have to set it up. Somebody will then market it also, no? They'll be the enabler.
and they will identify good teachers and tell them, sir, आप बोलिए, बाकी हमारा है. इकोसिस्टम बन जाएगा, बन जाएगा. हर चीज के लिए बनता है इकोसिस्टम. Where there is a little bit of, where you can monetize the system, it becomes doable. Can I ask you some very short questions now? If for the parents, students, teachers watching, just give them a recommendation list of ये पढ़ लो 2-3 चीजें. What is your suggested reading list for? See, I think ये category wise होना चाहिए. मैं particular book नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत direction, थोड़ी बहुत ऊंचे विचार धारक जो होते हैं, जैसे विवेकानंद हो या कोई हो, वो पढ़ लो. थोड़ा सा expansion होता है माइंड का. थोड़ी बहुत इस तरह की फिक्शन पढ़ लो अलग अलग भाषा में, जो थोड़ा आई ओपनिंग होता है. चाहे वो प्रेमचंद के कुछ लेख हो, या शरद चंद्र के लेख हो, या मार्क ट्वेन की लेख हो, जो मतलब ट्रेडिशनल स्टोरी टेलर्स हैं, अच्छे स्टोरी टेलर्स, या विक्टर ह्यूगो हो, या साकी हो जो शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे. आयरिशमैन थे, उनका स्यूडोनिम साकी था. ठीक है. कुछ हद तक हिस्ट्री, जैसे इंडिया के बारे में ट्रेडिशनल बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, आप जिससे मर्जी. Just to be sure, I asked this from the perspective of parents. Help parents. You are saying this is what will help you. Yeah. I love it. Awesome. Parents, It's entertaining and it's useful. हिस्ट्री में आप पढ़ो A.L. Basham, The Wonder That Was India. ब्यूटीफुल बुक, और बहुत बैलेंस्ड बुक है. ना इधर का ना है, आइडियोलॉजिकली मोरलेस न्यूट्रल है. इंडिया के बारे में बहुत कुछ दर्शाती है. थोड़ी बहुत आप मैं मानता हूँ आपकी इंटरेस्ट जिधर हो, बट थोड़ी बहुत आपको मेरे ख्याल से कुछ एडवेंचर के बारे में भी पढ़ो. हाँ, माउंटेनियरिंग पे बहुत सारी किताबें हैं. एवरेस्ट के बारे में किताब है, एंटार्क्टिका के जर्नी के बारे में. ये सब पढ़ोगे, आई थिंक किड्स, इट एनहांसेस योर इंटरेक्शन विद किड्स. Amazing. है ना. I'm so happy I asked this because it's a totally different list from what I was expecting. I thought you might say Angela Duckworth, पढ़ लो थोड़ा very practical stuff. You're talking about very higher order, relax, look. Okay, what else? Teachers, students, anything you want to recommend? Teachers, I think, need to have 3 things. They should be highly empathetic. जो एम्पैथी चीज़ है ना, डैनियल गोलमैन ने हमें बताया कि एम्पैथी हमारे अंदर होती है. We lose that thing. आप किसी नर्सरी में जाइए, हॉस्पिटल में, जहाँ छोटे छोटे इन्फेंट्स रहते हैं. एक बच्चा रोता है तो सारे बच्चे रोते हैं. कुत्तों में है, एक कुत्ता रोएगा तो सारे कुत्ते रोएंगे. एनिमल्स में एम्पैथी है, बच्चों में एम्पैथी है. हम बड़ों में क्यों एम्पैथी चली जाती है? So as a teacher has to be hyper empathetic. Teacher has to be वो जो quest वाली है ना जुनून, quest वाली जुनून होना चाहिए for knowledge. कोई भी बच्चा 1000 सवाल पूछे तो you should happily encourage them to ask the 1001 questions. Never quell questioning. And third, you should have passion. The day you walk into a classroom and don't feel the passion, leave that job, do something else. Even at this age, every classroom I walk into with passion. And I've told myself, the day you don't feel passion, you don't feel you're in the zone. जो तेंदुलकर कहते हैं ना, वो zone में है. Teacher को हमेशा zone में होना चाहिए. Leave everything aside. If you're going to get your previous evening's moods into the classroom, you're not meant to be a teacher. Lovely. I love how you've left out be an expert in your field. You've वो left तो out हो like, ना, नहीं तो टीचर क्यों बनते हैं? minimum qualification है वो. Correct. But it's not the differentiator. No. Yeah. Okay. Photo. Photo एक और last please. If you can just look into the camera and tell people to please look at this channel and subscribe and all that in your own words. क्या था ये? So Central Board for Fixing Education. यार the Shiv. हाँ, तो Shiv's Central Board for Fixing Education. I love the name. Okay. You can go to any number of boards, but the only board that fixes education is this channel, so subscribe to it. Yeah, thank you. ये आपको मैं बताऊंगा बाद में. I'll send it to you. मैंने ना एक पूरा शो लिखा है called New School. News? New School. NU. New School is a full-on web series that I wrote, and I'm making the audio show for that.